Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Now we are to start the part of poetry from book 3, first year. Our first poem is The Rain. It is composed by W.H. Davies. First of all, you are to point out some difficult or important words and their parallel meanings, synonyms. Rich leaves on top. Rich leaves, rich usually is referred as the rich person having plenty of wealth, very successful. But here, rich leaves mean the lucky ones, खुशकिस्मत और जरखेज. Beneath, lower part, lower, नीचे. Sweet, nice, sweet, pleasant, खुशगवार, लतीफ़. Wondrous, surprising, amazing, wonderful, हैरान कुन. Sight, scene, मंजर, नज़ारा. The rain, बारिश. W.H. डेविस ने लिखी है. W.H. डेविस एक अंग्रेज़ शायर है और इसका मौजू फितरत की रंगीनियाँ और इंसान की सऊबतें और तकलीफ़ें हैं. W.H. डेविस एक सयाह था, टूरिस्ट था और उसने ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा अमेरिका, इंग्लिस्तान में आवारागर्दी में गुजारा और इस दौरान उसने कुदरत का बहुत करीब से मुशाहिदा किया. अपनी नज़मों के अंदर उसने फितरत की रंगीनियों और इंसान के अलमियों को मौजू बनाया है. उसकी तसनीफ़ात में द सोल्स डिस्ट्रॉयर, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ सुपर ट्रैम्प और लेजर मकबूल तसनीफ़ात हैं. तो हम नज़्म स्टार्ट करते हैं. I hear leaves drinking rain. I hear rich leaves on top, giving the poor beneath drop after drop. मैं पत्तों के बारिश पीने की आवाज़ सुनता हूँ. I hear rich leaves on top. मैं बालाई खुशकिस्मत पत्तों को सुनता हूँ. Giving the poor beneath drop after drop. जो कि नीचे वाले बदकिस्मत पत्तों को कतरा कतरा दे रहे हैं. 'Tis a sweet song, nice to hear. ये बहुत खूबसूरत एहसास है इस आवाज़ को सुनना. These green leaves drinking near. इन सब्ज़ पत्तों को बारिश पीते हुए सुनना. And when the sun comes out, और जब सूरज तलू होगा, after this rain shall stop, जब ये बारिश थम जाएगी, a wondrous light will fill. एक हैरान कुन रोशनी मामूर कर देगी. Each dark round drop. हर तारीख
और गोल कतरे को। आई होप द सन शाइन्स ब्राइट। मुझे उम्मीद है कि सूरज आबोताब से चमकेगा। इट विल बी अ लवली साइट। और ये मंज़र नहायत हसीन होगा, प्यारा होगा। Dear students, you will be given a stanza from any of the poems that we are to read about, and you will have to explain it with reference to the context. In reference, you will write down that these lines have been taken from the poem. From which poem the stanza or extract will be taken, the name of the poem, and composed by or written by, then the name of the poet. And in the context, you will give a brief description of the roundabout or the circumstances or the background of the poem. And in explanation, you will explain in your own words the thoughts, the feelings, and the picture that is presented by the poet in that stanza. So, this was our first poem. Now, you are to go through these lines and explain in your own words. So, when you will go through this poem deeply, and after having in mind the emotions and the feelings of the poet that he is going to describe in this poem, in fact, the rich leaves here, they do not denote the leaves only. यहाँ पर जब पत्तों का जिक्र है तो शायर का मतलब सिर्फ पत्ते नहीं है, बल्कि जब वो देखता है इन पत्तों को कि बारिश के कतरे सबसे पहले ऊपर वाले बालाई पत्तों पर गिरते हैं और वो बड़े खुशकिस्मत हैं कि वो बारिश का एक कसीर हिस्सा समेटते हैं, और नीचे वाले पत्ते वो बदकिस्मत कहलाते हैं। शायर उन्हें बदकिस्मत कहता है क्योंकि उन्हें बचा खुचा बारिश का पानी मिलता है। तो ये जो पिक्चर है, इन फैक्ट ही मेक्स अ सिमिलैरिटी between the leaves and the people of the society, the segregation of the society. In the society also, the people are segregated into the rich people and the poor people like the leaves of the trees. And as the rich leaves, they are getting the maximum advantage and benefit of the nature. In the same way, the rich people of the society, they enjoy all the pleasures and the luxuries of life mostly and in abundance. And the poor people, they also enjoy, but they enjoy those benefits and the luxuries that are discarded or left by the rich people. So this was our initial and the start poem. Inshallah, we shall meet with the next poem very soon. Okay, take care. Allah Hafiz.